Okay, students, we are here to solve the प्रॉब्लम्स ऑफ नीट 2020। बच्चों सबने अच्छा से एग्जाम दिया होगा और सभी बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन का फटाफट सॉल्यूशन। बहुत ही इजी पेपर रहा इस बार। जिन बच्चों से अच्छा से हुआ है बहुत अच्छा है, जिन बच्चों से अगर नहीं हो पाया है और बच्चे फिर से तैयारी कर रहे हैं तो इसको भी आप देख करके अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी जितने भी लैकुना है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट। मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 में गिवन है ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल has dipole moment of 16 into 10 to the power minus 9. So P is equal to 16 into 10 to the power minus 9 meter, and electric potential, we have to find electric potential at distance r is equal to 0.6 meter from the center of dipole situated in line making an angle of 60 degree with the dipole axis. आपके पास थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और ये डाइपोल के एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, और इससे 60 डिग्री के फॉर्मेशन के साथ इस पॉइंट पर हम आपको फाइंड करना है पोटेंशियल का वैल्यू। सो फॉर दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देयर इज के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, देयर इज पी 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, and cos 60 means 1/2, and r is equal to 0.6 का square. You can solve and you get an answer 400 volt. You go with your first option. Question number 92. In 92 number question, this is the question of LCR circuit. आप you will find your question just screen में बगल में ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपको दिखता रहेगा। आपके पास ये जो क्वेश्चन है, a series LCR circuit is connected to an AC voltage source. AC voltage source is applied here for LCR circuit. When L is removed from the circuit, that means C and R are only remaining. The phase difference between the voltage and current is pi/3. If C is removed, first L removed, second C removed from the circuit, the phase difference is again pi/3. There is one of the most important meaningful terms is when from LCR circuit, L, C and R circuit, you remove L, C and R. Whenever you remove this, you get phi is equal to pi/3. And when from such a circuit you remove C, then again you will find pi is equal to pi/3. There is phase difference are same, that means it is represent resonance point. At resonance point XL is equal to XC, and at this point power factor is equal to 1. So you can go with option again 1, first option. Third question means 93 number question. Light of frequency 1.5 times the threshold frequency. Light of frequency 1.5 times frequency of light is equal to 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved? You know very well कि whenever incident frequency is equal to given 1.5 times of the required frequency. Threshold frequency means the frequency of light after which light start to emit, electron start to emit from the plate. ओके मतलब किसी भी प्लेट से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए हमारे पास जितनी फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है वो फ्रीक्वेंसी होता है न्यू नॉट। और आपके पास स्टार्टिंग में गिवन था कि आपने जो लाइट फॉल किया उसकी फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स है न्यू नॉट के। बाद में देन आफ्टर आपने क्या किया, आपने जो भी आप पहले सप्लाई किए थे उस सप्लाई का हाफ कर लिए। हाफ किए मीन्स आपके पास क्या आ गया, 0.75 टाइम्स ऑफ द न्यू नॉट हो गया। अब ये न्यू आपके पास लाइट आपने जो फॉल किया है उसकी फ्रीक्वेंसी अब हो गया न्यू नॉट, न्यू एन, जो कि 0.7 टाइम्स है न्यू नॉट के। तो 0.7 टाइम्स है न्यू नॉट के मीन्स
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल भी नहीं है, तो यहाँ से कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट एमिशन नहीं होगा, सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट एमिशन विल बी 0. सो यू कैन गो विथ योर ऑप्शन नंबर 2. Question number 94. In 94, dimension of stress can be found with the help of stress is equal to force upon area. Stress is equal to force upon area. So force is equal to m1 L1 T minus 2 and area is equal to L2. So m1 L minus 1 T minus 2. You can go with option number 2. Question number 95. At an electron is accelerated from the rest, u is equal to 0, through a potential difference of voltage V. Voltage is given here V. If de Broglie wavelength of, there is given de Broglie wavelength 1.2227 into 10 to the power minus 2 nanometer, you can change by multiplying it with minus 9 meter. The potential difference, we have to find potential difference. So for that, for de Broglie equation, we have equation of the wavelength, that is equal to lambda is equal to 1.22 into 10 to the power upon root V. We have to find V by cross multiplication. V is equal to 1.22 upon lambda. You replace root over sign, multiplied, squaring at both sides, you get your answer is 1.22 and divided by lambda, that is 1.227 into 10 to the power minus 2, and there is also 10 to the power minus 9, or up whenever you solve it by its square, you find your answer, that is equal to 10 to the power 4 volt. You go with option number 2. Now question number 96. In 96 number question, we have the capacitors of parallel plate capacitance. Parallel plate capacitor with a medium, with air as a medium, is 6 microfarad. There is given C of air is equal to 6 microfarad. C air 6 microfarad. And with the introduction of dielectric material, the capacitance become in a medium, its value is equal to 30 microfarad. We know that simply. And what is the permittivity of a medium? We have to find permittivity. We know very well about the system. Permittivity, relative permittivity is equal to permittivity of medium upon permittivity relative permittivity is equal to permittivity of medium upon permittivity in air. So permittivity of medium is equal to relative into epsilon naught, or from equation, from formulas of capacitor, C is directly proportional to permittivity. So you can write relative permittivity is equal to, and for that it is equal to, there is, its value is 8.85 into 10 to the power minus 12, and the given value for this is equal to 5. You will multiply, you get your answer 0.044 into 10 to the power minus 10 meter square. Next question, question number 97. In 97 number question, the solid which have the negative temperature coefficient, so negative temperature coefficient, definitely everyone know about the semiconductor, and also there is possibility in insulator, because initial state of the semiconductor is a insulator. So it's, you can go with the answer number 2. For in 98 number question, for transistor, which of the following statement is correct? You know very well, in a transistor, this is the base section, emitter section, and
collector section, this section is very thin and this one is the thick and this one is also the thick. So you will say that option number 2, the base region must be very thin and lightly topped. So you can go with the option number 2 in 98. In 99 number question, this is from your screw gauge. Screw gauge, you know very well about the screw gauge. Screw gauge is used to measure the small length, small dimension for any circular body. So screw gauge is equal to, it is equal to its formula in screw gauge, least count is equal to pitch upon number of circular scale division. So pitch is equal to least count into number of circular scale division. So least count is equal to, in your question given that least count की value 0.01 mm और number of circular scale division is equal to 50. You multiply, you get your answer 0.5 mm. You can go with option number 1. So in question number 100, in 100 number question, आप 1 by 1 साइड में आपके क्वेश्चंस दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन को देखते जाएंगे और आपके पास 100 नंबर क्वेश्चन में द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. इन सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्प्लेसमेंट y is equal to a sin omega t. Whenever you differentiate dy by dt, you get a omega and cos of omega t. Again this is equal to, मतलब displacement upon time is equal to velocity. Again this velocity upon time is equal to acceleration. So a omega square cos differentiation is equal to minus sin omega t. This is acceleration. Now you compare with your displacement, first equation and third equation. You get there is phase same to same, but sign there is positive and there is negative, means same direction, same path in opposite direction, same horizontal line in opposite direction. That means phase difference become 180. So you can go with option third. Question number 101. Question number 101. A long solenoid of length 50 centimeter. Long solenoid of length 50 centimeter. Length 50 centimeter, having number of turns n is equal to 100 turns, carry current I is equal to 2.5 ampere. What is the magnetic field? B is equal to mu naught n I. You can solve with this situation. आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर क्या होगा? म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई 10 to the power -7 और n is equal to 100 and there is I is equal to 2.5. आप इसको कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे. यू कैन फाइंड योर आंसर, दैट इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 to the power 6.28 इंटू 10 to the power -4 टेस्ला. So you can go with option number third. In 102 number question, in 102 number question, ball is falling from any height with 20 meter per second and hit the ground with 80 meter per second. बॉल किसी हाइट से गिर रहा है ऐसे डाउनवर्ड 20 मीटर पर सेकेंड से और ये h हाइट से फॉल हो रहा है. इसी h हाइट को फाइंड करना है कि जब अब यहाँ पर जब भी बॉल डाउनवर्ड आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा और इसके कारण ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी is increasing, potential energy decreasing and kinetic energy increasing as per the conservation of principle. So this is equal to mgh and this is equal to half m v final 80 square minus 20 square. M and m are cancel. We have to find h. H is equal to, there is 80 plus 20 or there is 80 minus 20 upon 2 into h is 10. आप
सॉल्व करेंगे इसको, h इज इक्वल टू देयर इज 100 इंटू 60 अपॉन 20, h is equal to 300. Now next question 103 is belongs to current electricity. B.B. Roy of Great Britain have very good wife. इस कंसेप्ट से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो B.B. Roy of Great Britain have very good wife. Has very good wife. आप इसको अगर नोट करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, you get your answer 47 into 10 to the power 1 plus minus 5%, आपका आंसर होगा 470. That's it, 103 number. So you can go with option number 2. Next is 104 number question. Brewster's law, IB for interface. IB for interface is equal to 56 degree, that is in between 45 degree to 90 degree. So you can go with option number 1. Option number 1. Now in question 105 number question, ray of light, incidents on a prism in one of the surface of a small angle prism with a ray. This one is the normal, so small angle prism, there is also given angle of incidence is equal to a, and emerge it is normally, so there is 90 degree. Very simple question, and it is made by Snell's law. You can find by mu is equal to sin I upon sin r. Okay, now then what is the angle of incidence? So you can find mu is equal to sin refractive index mu given है, the angle of incidence is nearly equal to at normal incidence, it is equal to angle of prism, r is equal to angle of prism, so mu is equal to sin a equal to sin of I, so I is equal to mu into a. You can go with option number 1. Now बच्चों question number 106, there is given two cylinder, first is A and second one is B, having equal capacity of CA is equal to capacity of B, are connected to each other by via a stopcock. किसी अरेंजमेंट के साथ ये इसके साथ कनेक्टेड है, एंड कंटेन एन आइडल गैस. इट हैव द आइडल गैस विथ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. बी इज कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड. बी यहाँ पर कम्प्लीटली इवैक्यूएट कर लिया गया, एंड द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड. और पूरे सिस्टम को थर्मली इंसुलेट करके रखा गया, मींस पूरे सिस्टम को आइसोथर्मल केस मेंटेन हो सके ऐसे सिचुएशन में रखा गया. स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन. जब हम सडनली ओपन करते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है? सडन ओपन की प्रोसेस जो होगी, सडनली ओपन प्रोसेस इज आप यू कैन गो विथ ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए एडियाबैटिक प्रोसेस. So it's and right answer is 4. Now question number 107, for which of the following Bohr's model is not valid? It is not valid for deuteron or atoms. Direct question. Question number 108, two bodies of mass. It is also formality question. 108 number question. 108 number question is formality question. It is equal to, there is 4 kg and there is 6 kg. What is the acceleration of the system? So acceleration is equal to m2 minus m1 upon m2 plus m1 into g. So 6 minus 4 upon 6 plus 4 into 10. So it is equal to 2 upon 10.
6 minus 4 upon 6 plus 4 into G, you can say that is G. So it is equal to 5 into G. So G by 5 is right answer. G by 5. You can go with option number 1. Question number 109. 109. In a certain region of the space with volume 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt throughout. Volume is equal to 0.2 meter cube and electric potential is equal to 5 volt throughout. Throughout means constant. So what is the electric field? Electric field equal to change in voltage with respect to distance. So there is constant potential. So you will say electric field is equal to 0. So E is equal to 0. In 110 number question, 109 option number 3rd is right. Question number 110. There is given 235 uranium 92 is bombarded with the neutron. इसमें हमने bombarding किया न्यूट्रॉन का. What will we get? We get krypton 89 Kr and 36 plus 3 neutron also. 3 neutron. When it is bombarded with it generate bombarded with a neutron, it generate this and 3 neutron. And what is our situation? In this situation we have to find question number our question is what will again also here there is given 1. Now we have to find here value any component. Let us suppose a component will find. So what is here? That is equal to left side 235 plus 1 is equal to 236. Right side is equal to 3 neutron and 89 and 3 is equal to 92. आप इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे. 4 and 14 means the value is 144 here at the top, and at the bottom 92 plus 0 is equal to 92, and there is 36 plus 0 also. 3 into 0 0 is equal to 36. आप इसको माइनस करेंगे. माइनस करने से आपको रिजल्ट मिलेगा 56. सो your answer will be 144 and beryllium 56. You can go with the option number 3. Now question number 111. चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 111. The energy equivalent of 0.5 gram of substance m is equal to 0.5 gram means 10 to the power minus 3 kg. We go with Einstein equation mc square. So m is equal to 0.5 into 10 to the power minus 3 and c is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर स्क्वायर. आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. या देयर इज 0.5 into 10 to the power minus 3 and there is 3 3 9 into 10 to the power 16. 9 5 जा 4.5 into 10 to the power minus 13, sorry plus 13. So you can go with option number 4. Next question 112 is directly formula. It is equal to 1 by root 2 pi d square. Question number 113. A wire of length L, wire having the length given है, length is given that L, cross section area is A and hanging from its fixed support, length is given L, area of cross section
area of cross section is A, length of the wire is changed to L1, length is changed, change in length is equal to L1 minus L is equal, and when mass m is suspended from, whenever you just give m mass, its length is changed by L to L1, so change in length is equal to L1 minus L. So what is the equation of Young modulus? Young modulus equal to होता है stress upon strain, stress is equal to force upon area, और strain is equal to change in length upon actual length. तो stress force is equal to m into g into L upon A into L1 minus L. So you can go with option number 2. Next question 114 is here, a spherical conductor of radius, that is equal to, a spherical conductor of radius is equal to r is equal to 10 centimeter is here, have the charge q is equal to 3.2 into 10 to the power minus 7 distributed uniformly. What is the magnitude of electric field? E find करना है हम लोग को at point r is equal to 15 centimeter. So you can find by E is equal to k q upon r square, or k 9 into 10 to the power 9, q is equal to 3.2 into 10 to the power minus 7, and r is equal to 10 into 10 to the power minus 2 whole square. You can solve and go with option number 1.28 into 10 to the power 5, option number 4. Next question number, the energy required to break one bond in DNA is 10 to the power minus 20 joule. Question number है 115, the energy required to break one bond in a DNA is 10 to the power minus 20 joule. Energy is equal to 10 to the power minus 20 joule. The value in electron volt. In electron volt we have to find its value in electron volt. That means it is simply divide by 10 to the power minus 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. So 1 joule is equal to 1.6 into 10 to the power minus 1 electron volt upon 1.6 into 10 to the power minus 19 electron volt. So how many joule is here? 10 to the power minus 20 joule is equal to 1 into 10 to the power minus 20 upon 1.6 into 10 to the power minus 19. You can solve and you get your answer, that is equal to 0.06. Yeah, 6 into 10 to the power minus 2 electron volt. Your next question number 116 number question. 116 number question is, a body having weight is equal to 72 Newton on the surface of Earth. What is the gravitational force on it at a height equal to half of its radius? So gravitational force is equal to F is equal to G capital M into small m upon R plus H का whole square. So F is equal to G capital M small m upon R. There is given R by 2 का whole square. So your answer is equal to F equal to, there is LCM, so there is 2 plus 1 3 or this one is on top, so 4 by 9 because of square, or G m upon R square. This one is given to 72, so 8 is equal to 32 Newton. So you can go with option number 4. Question number 117 you can solve 117. This one is for logic gates. To solve the problem of logic gates, one of the very important and simple way to solve it, first of all you take two different signals.
of 0 0, let us suppose a equal to 0 and also b equal to 0. When it is passes 0, you get here 1, you get also here 1. There is a NOR gate. NOR gate means आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फिर नॉट लेंगे, मीन्स a प्लस बी का नॉट मीन्स a नॉट डॉट b नॉट. सो a सिग्नल is here 1, 1 is passing from here, so 1 plus 1, 1 plus 1 का not, 1 plus 1 1 और 1 का not is equal to 0. so it's option. आप इसके बेस पर अगर मैच करें तो आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शंस राइट होते हैं. फिर लेकिन और भी केसेस के लिए चेक कर लें कि whenever you take there is a equal to 1 and this one is equal to 0, और इस बेसिस पर जब आप इसको चेक करेंगे then you go with option number third. so your third answer will be right. क्वेश्चन नंबर 118, थर्ड ऑप्शन में आप जब इसको पुटअप करेंगे थर्ड ऑप्शन में तो आपके पास ये आंसर इजी वे में आ जाएगा जो इसमें गिवन टेबल है. थर्ड ऑप्शन का अगर आप फर्स्ट a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर भी 0 आएगा. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118. Young's double slit experiment, beta equal to lambda capital D upon small d. According to your question, just increase 2 times distance between screen and slit and half the distance in between screen. So beta equal to 4 times lambda capital D upon small d. So nu is equal to 4 times of the beta. So you go with option number 1. Now question number 119. In 119 question, a capillary tube of radius r is immersed in water and water rise in it to a height h. Water rise to height h. The mass of the water in the capillary, mass of water is equal to 5 gram. Another capillary tube have radius, second capillary tube have radius 2r. Its radius is 2r. First having the radius, let us suppose, is only r. 2r and immersed in water. Then mass of the water. We have to ask about the mass. ओके अब इस केसेस में अगर हम लोग रिलेशन को देखें तो हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. दैट मीन्स देयर इज 2 टाइम्स ऑफ हाइट. सो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. सो हाइट become half होगा. and in this case now volume will first volume case volume equal to pi r square r1 square h1. now v2 second volume is equal to pi r2 square h2. so v2 is equal to pi r2 means आपके पास 2r स्क्वायर और h2 मीन्स h by 2. now v2 is equal to pi, there is 4r square into h by 2, this one is cancelled. so v2 is equal to 2 pi r square h. that means v2 is equal to 2 times of the first. volume become double. अब now volume become double, so mass is equal to, you know very well about that, density is equal to mass upon volume. so mass is equal to density into volume and density is taken water, so density is constant, so mass is directly proportional to volume. so you can say it is just directly proportional. अगर वॉल्यूम यहाँ पर 2 टाइम्स हो गया है तो मास ऑल्सो 2 टाइम्स हो जाएगा. देन यू कैन गो विद द ऑप्शन 4th. दैट आंसर विल बी 10 ग्राम. क्वेश्चन नंबर 120. इन 120 a cylinder contain hydrogen gas
at a pressure of 249 Pascal and the temperature 27 degrees Celsius, its density will be now density is equal to mass upon volume, or we know that PV is equal to nRT, so volume is equal to N into R into T upon P. So density is equal to mass upon nRT, and this is P. So density is equal to mass is given for hydrogen mass 2 × 10⁻³ pressure is given, that is equal to 249 and N is equal to 1 and R is equal to 8.3 and temperature is equal to 300 Kelvin. आप इसको सॉल्व करिए पूरा सारे कॉन्सेप्ट को एंड यू विल फाइंड योर आंसर इज 2.2 kg/m³। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। एनटीए जो टेस्ट ले रहा था उस टेस्ट में बच्चों ऐसे क्वेश्चंस दिए थे, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बट उसने जस्ट क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया और बहुत सिंपल क्वेश्चंस के बेस पर ये एग्जामिनेशन लिया है। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 121 इज इक्वल टू सच दैट 121 परमिबिलिटी, बच्चों का स्मॉल फॉर्मेलिटी क्वेश्चन, that is permeability is equal to, and the given is that 121 an iron rod have the susceptibility that is equal to chi is equal to 599 and is subjected to the magnetizing field, that is B, magnetizing field H is equal to 1200. The permeability of rod we have to ask, and we have given mu naught is equal to 4 pi into 10⁻⁻⁷। तो very simple question कि mu rod is equal to 4 pi into 10⁻⁻⁷ into 599. You will solve and go with your option 2.4 into 10⁻⁻⁴. The option will be third will be right. Question number 122, again not only simple, very simple. Question number 122 is given the torque. In past videos, बहुत बार वीडियो में हमने इस बात को डिस्कस किया है कि टॉर्क बच्चों F क्रॉस R नहीं होता, इट इज नॉट F क्रॉस R, इट इज ए R क्रॉस F. Important point. So definitely you will put the value. There is position vector 2k and force is equal to 3j. Now torque is equal to 2 into 3 and k cross j, you multiply 6, k cross j is minus I. बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट वे हैं जिस वे में हम इसको फाइंड कर लेते हैं कि I क्रॉस j इज इक्वल टू k, बट j क्रॉस I इज इक्वल टू माइनस k, j क्रॉस k इज I, k क्रॉस j इज माइनस I एंड k क्रॉस I इज j। देन ये आपका कॉन्सेप्ट है, तो इसके बेस पर आप इसके ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस मीन्स आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस का F इक्वल टू 3 इज आपके पास एवरेज थर्मल एनर्जी that is equal to 3 by F/2 kT. So for the monoatomic it is equal to 3, so 3/2 kT. So you can go with the option number 4. Question number 124, sorry, this is question number 124.
3. And now question number 124. 124 is here. 124, in question 124, assume the light of wavelength lambda is equal to 600 into 10 to the power minus 9 meter is coming from the star. स्टार से ये आपके पास आ रहा है. द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप. आपके पास क्वेश्चन है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का. बच्चों एकदम बच्चों का खेल क्वेश्चन हो गया. ये आपसे ओनली फॉर्मुलेटिक क्वेश्चन बोल रहा है. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी, एंड फॉर दैट डायमीटर इज ऑल्सो गिवन. डायमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर. आप यहाँ पर पुटअप कर लीजिए. 1.22 लैम्डा इज इक्वल टू 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और d इज इक्वल टू 2. आप कैलकुलेशन करेंगे. कैलकुलेशन करने से आपका रिजल्ट आएगा 3.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. ये आपके पास रिजल्ट हुआ. क्वेश्चन नंबर 125. इन 125, लाइट विथ एवरेज फ्लक्स of 20 watts per centimeter square. Average flux is equal to 20 watt per centimeter square. Average flux is equal to 20 watt per centimeter square. Fall on the non-reflecting surface at normal incidence having the surface area. Area is equal to 20 centimeter square. So the energy received, एनर्जी हमको फाइंड करना है. एनर्जी रिसीव्ड क्या होगा? तो जितना फॉल हो रहा है पर मिनट में, ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी रिसीव्ड ड्यूरिंग द स्पान ऑफ 1 मिनट. इन 1 मिनट आपके पास एनर्जी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. एनर्जी कितना होगा? क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं. लाइट विद एवरेज फ्लक्स. फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स, लाइट की फ्लक्स से एनर्जी गिवन है 20. Fall on a non-reflecting surface at normal incidence having the surface area. Surface area is equal to given 20. Now we can find its total power. Its power is equal to P equal to 20 into 20, that is equal to 400, and we have to find energy in 1 minute. So energy is equal to 400 into 1. So you will find its value is equal to that is equal to E equal to 400 into 60 second. So 6 4 ja 24 into 10 to the power 3. You can go with option 1. Now 126 number question. The ratio of contribution made by electric field and magnetic field component to intensity. Intensity and amplitude, there is a two different word. For intensity, our question, intensity of electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो इंटेंसिटी के लिए 1:1 होता है. एम्पलीट्यूड के लिए डिफरेंट होता है. एम्पलीट्यूड के लिए डिफरेंट होता है. ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी इज डिपेंड ऑन एनर्जी. बच्चों, ये एनर्जी पर इंटेंसिटी डिपेंड करता है. इस बार नेक्स्ट टाइम के क्वेश्चंस में अगर इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो आपका क्वेश्चन वो उसको एनर्जी के टर्म्स में कन्वर्ट करके मे बी आस्क. यू कैन गो विथ ऑप्शन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 127, which of the following graph represent variation of resistivity and temperature for copper? Copper is a metal. Metal means this is the graph for that, because for a metal it is the graph between resistivity rho and temperature T. This is its having positive coefficient of resistivity. Okay, so you go with option number 1 in question number 127. In question number 128 is the quantity of heat. Quantity of heat required to raise the temperature of two solid copper sphere of radius R1 is equal to 1.5 times of R2. So in this case, throw 1 Kelvin R
are in ratio. Okay, so you know that कि quantity of heat required, so we know that quantity is directly proportional to mass and mass is directly proportional to volume and volume is directly proportional to, बच्चों, the given object is a spherical body, so it is directly proportional to cube of radius. So we can say कि mass is directly proportional to mass, quantity directly proportional to mass, directly proportional to volume, directly proportional to r cube. We have to find relation in between them. So q1 upon q2 is equal to r1 upon r2 का cube, you can write in r. So r1 upon r2 is here, r1 upon r2 is equal to 1.5 and this one is cancelled, so it is equal to 3 by 2. So q1 upon q2 is equal to 3 by 2 square, that is equal to 9 upon 4. You can go with option number 4. Question number 129. 27, sorry बेटा, ये होगा क्यूब मीन्स 27 by 8. So you can go with option number 3. Yes. One question number. मीटर ब्रिज में वन साइड इज रेजिस्टेंस R and it is balanced by 10 ohm, so its ratio is equal to given 3 by 2. From this question R is equal to 3 by 2 into 10 and that is equal to 15 ohm. अब now by reading the question, resistance wire connected to left gap of meter bridge balance 10 ohm resistance. बैलेंस करने के लिए आपका 10 ओम रेजिस्टेंस है एंड राइट गैप विच डिवाइड द ब्रिज वायर इन रेशियो 3:2. इफ द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज 1.5, लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज गिवन टू 1.5, देन लेंथ ऑफ 1 ओम, ओके, लेंथ इज इक्वल टू 1.5 मीटर हैविंग 15 ohm, that is equal to 15 ohm. So what is the length for 1 ohm? So for 1 ohm it is equal to 1.5 upon 15, cancel 10, 1, that is 10 to the power minus 1. So you can go with option number 4. 130, the increase in the width of depletion region in PN junction. You know very well about the PN junction diode. PN junction diode, that is P and N, and there is the depletion region in between there. Whenever you will increase, you will supply it with reverse bias. Reverse bias means P is connected to negative, N is connected to positive. You find there is negative section attract its majority holes या positive charge particles and positive attract negative electrons. So in this way it is moving in this direction and this plate is moving in this direction, so its depletion region will be increasing. Now you can go with option number 130. In reverse base only this is possible. In 131 number question. 131, a 40 ohm resistor, 40 microfarad, C is equal to given 40 into 10 to the power minus 6 farad capacitor is connected to the 200 volt 50 hertz AC supply. This 200 volt is a VRMS because it is given AC. बच्चों बहुत बार इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने बहुत सारे क्लासेस में. हम लोग के पास जब भी AC करंट गिवन होता है मींस RMS वैल्यू आपको गिवन है और DC गिवन होता है तो वो पिक वैल्यू गिवन है. ओके, नाउ देयर इज गिवन VRMS, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज. ओके, द RMS वैल्यू ऑफ करंट IRMS वी हैव टू फाइंड. V इज इक्वल टू IR, so I is equal to V upon R, so it is equal to V RMS upon R, means there is resistance, reactance and impedance. So there is a reactance of XC.
एक्स इज इक्वल टू आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस इज इक्वल टू 200 और एक्स इज इक्वल टू ओमेगा सी सो नाउ आई आर एम एस इज इक्वल टू 200 अपॉन 2 पाई न्यू एंड सी, आप सभी वैल्यूज को पुटअप कर लें, 200 अपॉन 2 इंटू 22/7 और न्यू इज इक्वल टू न्यू वैल्यू ऑफ न्यू इज इक्वल टू गिवन 50 एंड सी इज इक्वल टू व्हाट इज कैपेसिटेंस, दैट इज 40 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू हियर 10⁻6। यू विल सॉल्व आई आर एम एस इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से आपका आंसर आएगा 2.5 एम्पियर। यू कैन गो विद ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 9.99 minus 0.0099. There is 0, there is 10 minus 9 1, there is 9 minus 9 0, there is 8 minus 0 is equal to 8 and there is there is 9. But one of the important thing, आपके पास जो क्वेश्चंस गिवन है उस क्वेश्चन में लिस्ट नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं आपके पास। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये यहाँ पर 3 डिजिट लेने हैं, तो आपका आंसर होगा 9.98। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर 9.98 से जा सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 133। ये क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन 10⁻⁻4, इलेक्ट्रिक फील्ड is given 3 into 10⁻⁻10 and mu is equal to, we know drift velocity upon electric field, drift velocity 7.6 into 10⁻⁻4 and E is equal to 3 into 10⁻⁻10। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 2.5 into 10⁻6। you can go with option number 4. now next question, in a guitar 2 string A and B made of the same material, ये first string and second string, question number 134, and slightly out of tune and produce beats of 6 hertz, ये 6 hertz का beats produce करता है। when tension in B is decrease, A and B टेंशन, इसमें टेंशन इंक्रीज हो रहा है, then the tension in B is decreased, the beat frequency increased to 7. beat frequency को 7 hertz इंक्रीज करना होता है जब ये टेंशन इसमें डिक्रीज होता है। if the frequency of A की फ्रीक्वेंसी है 530, ठीक है, then original frequency of B की ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली आपको सेकंड का ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है। आपके पास 6 हर्ट्स का डिफरेंस है, तो ये डिक्रीज हो रहा है अगर आपकी इसका फ्रिक्वेंसी, मीन्स आपके पास लाइन में गिवन है कि व्हेन द टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज, इसमें आप टेंशन को डिक्रीज करते हैं। तो टेंशन जब डिक्रीज करेंगे तब उस केसेस में 530 माइनस 6 इज इक्वल टू 524, मीन्स इसकी फ्रिक्वेंसी 524 होगा। तभी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप इसमें जब टेंशन को डिक्रीज करें तो इसका फ्रिक्वेंसी 7 हर्ट्ज से इंक्रीज होगा। सो आप इसमें ऑप्शन नंबर 1 524 पे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 इज given here, 2 particles of mass 5 kg, the 2 particles 5 kg and 10 kg respectively are attached to the 2 ends of rigid rod of length 1 meter. The given is 1 meter. Okay, the center of mass of the system from the 5 kg, यहाँ से आपको सेंटर ऑफ मास लेट सपोज आपको फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन D इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से फाइंड करना सेंटर ऑफ मास के लिए m2 सेकेंड मास अपॉन फर्स्ट मास प्लस सेकेंड मास इनटू आपके पास जो भी डिस्टेंस है, कंप्लीट डिस्टेंस इन बिटवीन देम, कंप्लीट डिस्टेंस x लेट कर लेता हूँ मैं पूरा, ये 1 मीटर गिवन है। सो D इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 प्लस 5 और इट इज इंटू 1।
सो d इज इक्वल टू 10/15 इंटू 1, 5 2 जा दैट इज 2/3 and you will solve, you get your answer 2/3 into 1 means 2/3 into 100 centimeter, that is 67 centimeter. So you can go with option number 1. डियर स्टूडेंट, ये कंप्लीट नीट का सॉल्यूशन था। अभी इसके बाद जेईई एडवांस के पेपर्स हैं, उसके भी 1 बाय 1 आपको सॉल्यूशन सभी क्वेश्चन के चैप्टर वाइज भी और टॉपिक वाइज भी और आपको मिलते जाएंगे। आपको जिस भी चीज़ में ऐसा लगता है कि वी हैव टू लर्न अबाउट दिस टॉपिक, आप इसके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर हमको इस टाइप के टॉपिक्स को और एक्सप्लेन कीजिए। हम वैसे ही वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। आशा करता हूँ कि ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, सब अच्छा ही करेंगे।